declared at a rate of this sum assured compound. Calculate a quarterly premium, very important. Throughout the term of the policy, if assume a reversionary bonus declared at a rate of this sum assured compounded vesting at the end. तो क्लास वेस्टिंग एट द एंड विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि हमें एंडोमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा प्योर एंड टर्म में, क्योंकि लास्ट ईयर का बेनिफिट डिफरेंट होगा, और सेकंड में हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. इतना लॉजिक हमेशा याद रखना. अविक करना पड़ेगा ऑफ दिस सम एश्योर्ड कंपाउंडेड वेस्टिंग एट द एंड. तो क्लास वेस्टिंग एट द एंड विद प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि हमें एंडोमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा प्योर एंड टर्म में, क्योंकि लास्ट ईयर का बेनिफिट डिफरेंट होगा, और सेकंड में हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. इतना लॉजिक हमेशा याद रखना. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास AM92 सेलेक्ट मोर्टेलिटी है, अंडरलाइन एंड मार्केट. 6% per annum expenses are given. Fine guys. So let's start with first EPV of premium. Fine. So class, let P be the quarterly premium. Very important. So if I am taking P as a quarterly premium, so it is equivalent to 4P. Now class, we will pay premium according to the product. We have an endowment assurance. That means the premium is advanced first thing and it is paid temporarily. We will, very important. So if I am taking P as a quarterly premium, so it is equivalent to 4P. Now class, we will pay premium according to the product. We have an endowment assurance. That means the premium is advanced first thing and it is paid temporarily. So class 4P A due select 40 24. Right class? Now we can't, although sum is x plus n is 60, still will not use your direct formula. We have to break into whole minus deferred. So that is 4P A due 40 select minus 3 by 8. Simultaneously I am doing the PSLE formula also. V20 20P40 A due 60 select effect finish 3 by 8. क्लास इसको मैं डी की टर्म्स में नहीं लिख सकता. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम. वी आर गिवन द डीएक्स इंफॉर्मेशन ओनली फॉर कैपिटल डी पार्ट ओनली फॉर 4%. फाइन. समटाइम इन बुक्स दिस इज ऑल्सो रीअरेंज. क्लास वो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर ये भी लिख सकता है 40-20. नाउ इसकी वैल्यू डायरेक्टली टेबल में दी हुई है. -3 by 8 कर कैपिटल डी पार्ट ओनली फॉर 4%. फाइन. समटाइम इन बुक्स दिस इज ऑल्सो रीअरेंज. क्लास वो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर ये भी लिख सकता है 40-20. नाउ इसकी वैल्यू डायरेक्टली टेबल में दी हुई है. -3 by 8 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get 1.06 raised to power -20 L60 divided by L select 40. Fine. Check the values in the table. You will get. So class, when you simplify this, you get 4P into 11.7352. Fine. And when you multiply this, you will get 46.9408 P class. Fine class. So this is my EPV of premium. Now class, let's discuss EPV of benefit. So class, EPV of benefit. Class 20,000 paid immediately on death and 1.92308%. तो क्लास लॉजिक मैंने आपको पहले बताया था 20,000 into 1.019238 v raised to power half. क्योंकि इमीडिएटली है मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया a
select 40 dash 20. This is my term at the rate I star is equal to 4%. Right, class? Plus class 20,000 V star raised to power 20, 20p select 40. This is V star means what? This is at the rate I star is equal to 4%. फाइन क्लास. और आप इसको ये भी लिख सकते थे 1.06 रेस टू पावर -20 इंटू 1.019238 रेस टू पावर 20. क्लास इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें यही मिलेगा. फाइन क्लास. अगेन होल माइनस डेफर्ड. और क्लास इस v के अंदर मैंने v लिखा है सिर्फ, so that means we are using 6%. So class it is 20,000 1.06 raised to power half divided by 1.019238. We can write a select 40 minus v20 v star 20, that is 1.04 raised to power -20 L 60 divided by L select 40 A 60 select का इफेक्ट खत्म. This is all at the rate 4% class. Fine. Plus class 20,000 into 1.04 raised to power -20 L 60 divided by L select 40. Class, take the values from the table and tell me the answer. What do you get? So class, when you solve this, we get 9291.39 class. This is what we get. Fine guys. अब आते हैं class expense पर. That is an interesting one. So class, let's talk about EPV of expense. So class, initial expense is 114% of first premium. Now class, remember this is a quarterly premium, only P we are taking. So class, 1.14 of P, right? 2.5% of basic sum assured. Class, basic sum assured is without bonus. उसको हम basic sum assured बोलते हैं. तो class plus 0.025, 2.5% basic sum assured is 20,000 class. Right class? Now this is interesting one. 4% of each quarterly premium excluding the first. Plus 4% हमें लगाना है excluding the first. अब क्लास पहले तो हमने अरियर लिख के काम चला लिया, बट क्लास अगर मैं इसमें अरियर लिखता हूं AXN 4, तो प्रॉब्लम ये आएगी. n का मतलब क्या हो गया, ये 20th ईयर के एंड पे भी लगेगा, बट हमें कहां तक लेना है, 19/3/4 तक वी आर पेइंग द प्रीमियम. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें सिर्फ एक्सक्लूड करना है फर्स्ट प्रीमियम. तो क्लास, so class we pay the premium from x plus 1/4, x plus 2/4, x plus 19/3/4. This is what I am paying the premium. But the expense of 4% is paid from here, 0.04p, 0.04p, 0.04p. Right? Plus प्रीमियम की प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ईपीवी हमने लिखा है. तो क्लास अगर मैं प्लस और माइनस कर दूं 0.04p, तो प्लस वाली टर्म तो इट मेक दिस, सो वी गेट 0.04 into 4p a due select 40 24, right?
एंड द माइनस वाली टर्म रह जाएगी क्लास 0.04p, राइट। ये मैंने 4p इसलिए लिखा क्योंकि जो अमाउंट आता है वो एनुअली आता है क्लास। नाउ वी कैन टेक 0.04 into 4p कॉमन, so class we left with a due select 40 420 minus 1 by 4, right class? So this is my expense, the 0.04 into 4p plus इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 11.7352 minus 1 by 4. Fine class. Simplify the calculations. So class, when you simplify, you get 2.9776p plus 500. Fine. So class, we have EPV of premium, EPV of benefit and expense, right? So class, equate EPV of premium. So formula was EPV of premium is equal to EPV of benefit plus expense class, right? So equate class 46.9408p is equivalent to 9239.39 plus 500 plus 2.9776p. Solve for p and get the answer class. So when you solve this, you get class 222.72. That is your premium. Fine. Hope you understood this question. So class, next topic is gross premium future loss random variable. Class, in this first term come loss. So class, what is my loss? Loss is outflow minus inflow. Remember this. And in this class, if the answer come positive, that means we have loss. If the answer is negative, this implies profit. Fine. Similarly, they ask about the profit function. The profit function is class inflow minus outflow, and here it is vice versa. Positive terms are profit and negative terms are losses. Fine class. So class, next term is random variable. So class, we have already seen the present value is a random variable in case of our these chapters. So class, we have to find present value of loss, which is equal to class outflows are what? Benefit and expenses. So class, present we have to find, and negative terms are losses. Fine class. So class, next term is random variable. So class, we have already seen the present value is a random variable in case of our these chapters. So class, we have to find present value of loss, which is equal to class outflows are what? Benefit and expenses. So class, present value of benefit plus present value of expenses minus present value of premium. Class, this is my equation of gross premium future loss random variable. Shortcut is this GPFLRV. Fine class. So class, let's take an example. Class, let us say we have whole life assurance with sum assured S. Benefit is paid immediately on death. Benefit is given immediately on death, right? Plus P is my annual premium
in advance and IEF are my expenses. Right, class? So, class, what are my benefits present value? So, class, present value of benefit निकालनी है. Benefit is given immediately on death. We have already seen in chapter 16 how to find for whole life assurance. Benefit is given immediately on death. So that is S into V raised to power Tx, right? Continuous random variable is there because benefit is immediately on death. Plus annual premium in advance for whole life. So that is what P, we have already seen it is A due what? Kx plus 1. Whole life annuity present value in advance. Plus these are my expenses. So expenses, initial expense present value is I. Plus E is my renewal expense start from second year. Arrear में आएगा E what? AKX. And class my terminal expense occur on when the policy is terminating. So class FV raised to power TX. Right? Substitute in the equation. So class present value of loss is SVTX plus I plus EAKX plus FVTX minus PA due KX plus 1. So class, this is the equation of gross premium future loss random variable. Class 2 to 4 marks question, they ask every time in your exam on this topic. Fine. Now class, let's see one more example of term assurance. So class, let's say we have a term assurance. Class S is a benefit given immediately on death. Right? Plus P is my annual premium. And I, E and F are my expenses. Fine. तो क्लास इस सिनेरियो के अंदर व्हाट इज माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस? So class, in case of term assurance, we have two scenarios. We have already seen कि one if life die before n and one if life survive at least n years. Right? So class, if life die before n, तो whole life वाला part आएगा SVKX plus 1 because this kx will take value what? Less than n. Fine. Plus I plus E A kx, the same thing. जो हमने ये whole life लिखा है वो as it is लिखेंगे आप. F V kx plus 1 minus P A due kx plus 1. Fine class. कोई प्रॉब्लम? अब क्लास बात करते हैं अगर लाइफ एटलीस्ट एन ईयर्स क्या करेगी? सरवाइव करेगी. तो क्लास अगर लाइफ x से लेकर x प्लस एन के बीच में सरवाइव करती है एन ईयर्स तक, तो क्लास सम एश्योर्ड क्या हो जाएगा आपका? 0. द कंपनी विल गिव नो बेनिफिट, तो क्लास दिस बिकम 0. माय इनिशियल एक्सपेंस विल गोज ऑन लाइक दैट ओनली. राइट? क्लास जो मेरा रिन्यूअल एक्सपेंस है वो x प्लस 1 से स्टार्ट होगा और इट विल गोज टिल n minus 1. Right? So that means it is EA n minus 1. सर्टन हो जाएगा बिकॉज हमें पता है यहां तक हम जिंदा हैं तो इतने हमने क्या किए होंगे? एक्सपेंस पे किए ही होंगे. क्लास टर्मिनल एक्सपेंस हमारा लगेगा ही नहीं जब हमने डेथ बेनिफिट ही नहीं दिया. तो वाई द टर्मिनल एक्सपेंस? माइनस वी हैव पेड हाउ मेनी प्रीमियम्स? क्लास वी हैव पेड एन सर्टन प्रीमियम यहां से लेकर यहां तक. तो इसीलिए P A due in class. Fine class.
Any problem? So remember this class. क्लास इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस आप टर्म बेनिफिट लिख सकते थे एस वी के एक्स प्लस वन फॉर के एक्स लेस देन एन, जीरो फॉर के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, प्लस आई प्लस ए मिनिमम ऑफ के एक्स प्लस वन कॉमा नॉट के एक्स प्लस वन के एक्स ओनली मिनिमम ऑफ के एक्स कॉमा एन माइनस वन और क्लास इसमें एस प्लस एफ लिख दीजिए, दोनों को क्लब कर दीजिए, माइनस पी ए ड्यू मिनिमम ऑफ के एक्स प्लस वन कॉमा है। तो आप ये भी लिख सकते थे। तो कई जगह बच्चे ये लिखा होगा, कई जगह ये लिखा होगा, आपको दोनों चीजों की क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फाइन क्लास, एनी प्रॉब्लम? तो क्लास लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर्स. दिस इज September 2008 IFOA question. Class, this same question is repeated 3 to 4 times in your exams. So this is very good question, class. So let's see what it says. A life insurance company issues decreasing term assurance. Life age 55 है, death benefit payable immediately है. It is decreasing by 10,000 every year, class. Fine. 10 years की life insurance term assurance policy है, class. Level annual premium payable in advance for 10 years है. AM92 select है, 4% per annum है. इनिशियल रिन्यूअल एक्सपेंस एंड क्लेम एक्सपेंस दोनों ही थोड़े से डिफरेंट हैं. So this is very good question, class. So let's see what it says. A life insurance company issues decreasing term assurance. Life age 55 है, death benefit payable immediately है. It is decreasing by 10,000 every year, class. Fine. 10 years की life insurance term assurance policy है, class. लेवल एनुअल प्रीमियम पेबल इन एडवांस फॉर 10 इयर्स है. AM92 सेलेक्ट है, 4% पर एनम है. इनिशियल रिन्यूअल एक्सपेंस एंड क्लेम एक्सपेंस दोनों ही थोड़े से डिफरेंट हैं. क्या है अभी बात करते हैं. क्लास, राइट ऑन द ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल. तो हमें ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल की बात की है. पी एज एनुअल प्रीमियम, 4 मार्क्स क्वेश्चन इट इज. फाइन. तो क्लास, how to write the decreasing term assurance present value first. So let's make it first present value of premium. Quickly write that.
So class present value of premium will be P A due what? Minimum of kx plus 1 comma n plus, right? Rather than I'll write here numbers also. Quickly write that. So class present value of premium will be P A due what? Minimum of kx plus 1 comma n plus premium present value for everybody. To life, very good question class. So let's see what it says. A life insurance company issues decreasing term assurance. Life age 55 है, death benefit payable immediately है. It is decreasing by 10,000 every year class. Fine. 10 years की life insurance term assurance policy है class. Level annual premium payable in advance for 10 years है. AM92 select है, 4% per annum है. इनिशियल रिन्यूअल एक्सपेंस एंड क्लेम एक्सपेंस दोनों ही थोड़े से डिफरेंट हैं. क्या है अभी बात करते हैं. क्लास राइट ऑन द ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल. तो हमें ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल की बात की है. पी एज एनुअल प्रीमियम 4 मार्क्स क्वेश्चन इट इज. फाइन. तो क्लास हाउ टू राइट द डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट. सो लेट्स make it first present value of premium. Quickly write that. So class present value of premium will be P A due what? Minimum of kx plus 1 comma n plus, right? Rather than I'll write here numbers also because we have given age and it is select mortality. So it is minimum of k select 55
plus 1 comma 10. We have given the value of n also. Fine class. Any problem? The class present value of बेनिफिट की बात करते हैं. तो क्लास फर्स्ट ईयर में अगर लाइफ डाई करेगी 55 to 56, 1 lakh is given. 56 to 57, it is 90,000 immediately on death, then 80,000 and so on. Fine. तो क्लास इफ आई से मैंने पहले बताया था इमीडिएटली डिक्रीजिंग के लिए विल राइट फर्स्ट 0 to tx. So can I say it is 1 lakh v raised to power tx, right? For die between first and second year, it is class 1 lakh minus 10,000 into 1 v raised to power tx, right? क्लास 10,000 का डिक्रीज है ना, तो फर्स्ट ईयर के बाद एक बार क्लास 2 to 3, so it is 1 lakh minus 10,000 into 2 v raised to power tx, right class? Similarly class 55 plus k to 55 plus k plus 1, what do you get? So can I say, see 1 है तो यहाँ 1 है, 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो kx है तो क्या आ जाएगा क्लास 1 lakh minus 10,000 kx v raised to power tx, correct or not? So class, in short we can say it is 1 lakh minus 10,000 kx into v raised to power tx. For tx, again class select mortality is there, let me write. So k select 55, v raised to power t select 55, where t55 select less than 10, right? Class अगर t55 select greater than equal to 10 हुआ तो we have what? 0 as the benefit because it is a term assurance class. Fine. चलिए. Now class, let's talk about expenses. That is also very, very interesting in this. So class, present value of expense. It's a 4 marks question class. थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है. क्लास इनिशियल एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 300 प्लस 25% ऑफ प्रीमियम, सो 300 प्लस 0.25 p. फाइन. 5% ऑफ ऑल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास. रिन्यूअल एक्सपेंस है, फर्स्ट में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा, तो E इज व्हाट 5% ऑफ प्रीमियम, सो क्लास 0.05 p, राइट. A what? K select 55, minimum of K select 55 and maximum 9 premiums are there renewal. Fine. Now class, last two are very, very important. Now let's understand this. Class 50 into 1.054 raised to power t on each policy anniversary where t is the exact duration. तो एनिवर्सरी कब आएगी क्लास? हमने पॉलिसी ली 55 पर, 56 पर हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, सो इट इज 50 इंटू 1.04. 57 वी विल हैव 50 इंटू 1.04 का स्क्वायर, 58 एंड सो ऑन. बट क्लास कंसर्न ये है, लास्ट विल बी एट 64. बट क्लास इस क्वेश्चन में कंसर्न ये है सिर्फ
कि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 4% दिया हुआ है। तो क्लास जब आप इसको डिस्काउंट बैक करोगे एन्युटी के लिए, वी लगाओगे कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर लगाओगे कैंसिल हो जाएगा, वी क्यूब करोगे कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दिस इज लास्ट, जैसे हमने क्वेश्चन किया था सेम वही इसमें भी कहानी है। तो कैन आई से क्लास 50 a minimum of k select 55 comma 9 but this is at the rate 0%, क्योंकि क्लास आपका जो इंक्रीज है और जो पेमेंट है वो क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस इज बिकम एट व्हाट, 0%। फाइन। सिमिलरली क्लास द थर्ड वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि द 200 into 1.04 raised to power u where u is the exact duration of the policy at death। Similarly जो of, तो कैन आई से क्लास 50 a minimum of k select 55 comma 9 but this is at the rate 0%, क्योंकि क्लास आपका जो इंक्रीज है और जो पेमेंट है वो क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस इज बिकम एट व्हाट, 0%। फाइन। सिमिलरली क्लास द थर्ड वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि द 200 into 1.04 raised to power u where u is the exact duration of the policy at death। Now class, and measure in a year with a fraction counting। What is the meaning of this? That means class जहां पर भी वो डाई करेगा 55 plus t, पर यहां पर 200 into 1.04 रेस टू पावर t लगेगा। जब आप इसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो vt आएगा। क्लास अगेन ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्लास यू कैन से 200 रुपीज तभी लगेंगे जब वो लाइफ डाई करेगी, और अगर tx ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये vt वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्लास ये चीज देखने वाली है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट और आपका इंक्रीज सेम हो तो वो कैंसिल आउट करके उस प्रोडक्ट को 0% पे कर देगा, लाइक दिस। फाइन क्लास। सो क्लास दीज आर माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस। क्लास इसको आप नंबर दे दीजिए 1 2 3। अगर पेपर में टाइम नहीं है तो क्लास आप लिख सकते हो ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल इज व्हाट, 2 plus 3 minus 1। फाइन, कि आपने इनको नंबरिंग दे दी और फिनिश। नाउ क्लास वी हैव टू फाइंड प्रीमियम आल्सो। तो लेट्स फाइंड आउट द प्रीमियम पार्ट। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं ईपीवी ऑफ प्रीमियम। इट्स अ इजी वन। तो ईपीवी ऑफ प्रीमियम is what, PA due select 55 10। fine class 4%। है, सम इज कमिंग आउट टू बी 65। आपको डायरेक्टली एक्चुअल टेबल में गिवन है वैल्यू। सो क्लास फ्रॉम द टेबल यू गेट 8.228p। फाइन। नाउ क्लास लेट्स टॉक अबाउट ईपीवी ऑफ बेनिफिट। क्लास ईपीवी ऑफ बेनिफिट इज, क्लास जितने का डिक्रीज है उतना पहले में ऐड कर दीजिए। तो वी गेट 1,10,000 ए बार select 55 dash 10 minus 10,000 IA bar, because benefit is immediately 55 dash 10। fine। whole minus deferred, whole minus deferred, and पहले हमें
1,10,000, 1.04 raised to power half whole minus D65 by D55. I can write in D terms because 4% interest है class. A65 effect of your select is over minus 10,000, 1.04 raised to power half IA select 55 minus D65 divided by D55 IA65 plus 10A65. Right, class? Put the values from the table, class. You will get this as 2921. Fine. Now, class, let's find out the present value of expenses. So, class, present value of expense की अगर हम बात करें तो class initial 300 plus 0.25p इसकी EPV तो बच्चे as it is ही आएगी, right? Now this is what plus 0.05p. क्लास इसको मैंने बताया था कैसे लिखना है. A due select 55 10 minus 1. A due 55 10 की वैल्यू we have already there 8.228 plus 50A select 55 9 and plus 200 probability of TX less than 10. कि बच्चे ये एक्सपेंस लगेगा, हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए. तो क्लास अमाउंट इनटू द चांसेस विल गिव मी व्हाट एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू. इसमें इंटरेस्ट तो जीरो है इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट नहीं बोल रहा मैं, इसलिए एक्सपेक्टेड वर्ड यूज किया मैंने. तो अमाउंट इनटू द चांसेस. फाइन. अब क्लास दिस इज एट 0%. फाइन. क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ TX लेस देन 10? So class, what is this? Can I say this is 10Q select 55? This means what? A life age X survive less than 10 years. That means life died within 10 years, which is what? This. Fine. What about this? A select 55 9 at 0%. तो क्लास होल माइनस डेफर्ड, तो A select 55 माइनस V9 9P select 55 A64. राइट क्लास. क्लास हमने पहले ही देखा था अगर AX 0% पे है दिस इज रिटर्न एज EX. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. क्लास V9 बिकम 1 ओनली. So this is D64 divided by D select 55 and this is your E64. You can check the value from page number 82. Fine. Substitute here in the present value of expense. So class, when you simplify this, you will get 8.733. Fine. Now class, you have a present value of premium, benefit and class expenses. When you equate all this, you will get premium is equivalent to class 482.20. Please check. Class थोड़ा बहुत डिफरेंस हो 1-2 रुपए का कोई प्रॉब्लम नहीं है. Fine. Hope you understood how to solve this question. Fine. Class, let's try the probability question on gross premium future loss random variable. तो क्लास अगेन स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है. इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में. इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं. तो क्लास हमें 50 ईयर ओल्ड लाइफ दे रखा है. सम एश्योर्ड 75,000 है. होल लाइफ एश्योरेंस है. प्रीमियम आर पेबल एनुअली इन एडवांस. तो हमने ये पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट.
That calculate the minimum annual gross premium that a company should larger in order that a probability of making a loss in any policy would be 10%. Class, जब हम EPV is equivalent to EPV of premium is equal to EPV of benefit plus EPV of expense करते हैं, तो अगर क्लास आप इस सिनेरियो के अंदर देखें तो हमारा क्या होता है, अगर हम प्रीमियम को दूसरी साइड ले जाएं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्लास दिस इज माय ग्रॉस प्रीमियम फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो क्लास जो हमने इक्वलेंस रिलेशन निकाला है उसके अकॉर्डिंग हम मान के चल रहे हैं जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो क्या है, 0 है, राइट। ऑब्वियसली कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करेगा तो वो चाहेगा कि उसको लॉस ना हो। क्लास मैंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी, रिमेंबर एक्चुअल में लॉस हो सकता है बट वी एक्सपेक्ट जब हम पॉलिसी डिजाइन करते हैं कि हमें लॉस ना हो, क्योंकि अगर आप लॉस करोगे तो एक पॉइंट तक कर सकते हो, राइट। तो क्लास बट यहां पर वो स्ट्रैटेजी क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, ही वांट टू फाइंड द मिनिमम एनुअल ग्रॉस प्रीमियम सो दैट वी हैव मैक्सिमम लॉस एज 10%। लाइक क्लास अगर हम बात करें एक शॉप है, उस शॉप के अंदर शॉपकीपर के पास 100 आइटम्स हैं और उसके साथ एक और शॉप है उसके पास भी सारी सेम आइटम्स हैं, राइट। अब ये शॉपकीपर क्या करता है, कंपेरेटिव एज लेने के लिए इन 100 में से 99 की प्राइसिंग सेम कर देता है इस शॉप के, एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या करता है, जानबूझकर कम कर देता है, से 10% डिस्काउंट दे देता है। इससे क्या होगा, जो इसके कस्टमर है वो यहां आ जाएंगे। क्लास एक में ही आपने लॉस उठाया, बाकी 99 में क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो सेम थिंकिंग प्रोसेस से इंश्योरेंस कंपनी सोचती है कि अगर मैं 10% लॉस लेने के लिए तैयार रहता हूं तो कम से कम कितना प्रीमियम मुझसे चार्ज करना चाहिए। तो क्लास यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इक्वल टू 0 के हिसाब से प्रीमियम निकाला था। नाउ वी आर सेइंग अंडर दिस कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हमारा मैक्सिमम कितना हो, 10%, और 10% से कम, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रीमियम निकालना है।